Hello friends, we are going to explain the chapter number 8 of English literature, The Great Bus Chase. So now let's see. First we will see the new words. Let's see the first new word, that is frantic, almost out of control because of great emotion such as worry. फ्रेंटिक का मतलब होता है ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज ऑफ ग्रेट इमोशंस। जो हमारे इमोशंस है उसकी वजह से, खास करके चिंता की वजह से हम आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, वो दैट इज फ्रेंटिक। दूसरे मीनिंग से हुफ ऑफ जॉय, अ शॉर्ट लाउड shout of joy. Whoop of joy means a short loud shout of joy. In a flash, very quickly. In a flash means very quickly. Yanked open, yanked open, pulled open quickly and violently. Yanked open का मतलब होता है pulled open quickly and violently, बहुत ही वायोलेंटली, हिंसक तरीके से। एज्यूमिंग, टेकिंग समथिंग टू बी ट्रू विदाउट आस्किंग फॉर प्रूफ। एज्यूमिंग का मतलब है एज्यूम कर लेना, टेकिंग समथिंग टू बी ट्रू विदाउट आस्किंग प्रूफ, एनी काइंड ऑफ प्रूफ, सो दैट इज एज्यूमिंग। देन थर्मोस, अ स्पेशल container that keeps drinks hot or cold. We all know about that. And then last, these are only very few new words, very easy, and there is this many, and few are cut because of the forming of the paper at the time of PDF. So see in your book, tale of woe means a report of bad things that had happened. That is, tale of woe means a report of the bad things that had happened. Then scheduled, schedule means arranged to happen at a particular time. Schedule, arrange that happen to happen at a such particular time, that is schedule, timetable. Vacant, not occupied. Vacant, we say vacancy, that is vacant. Earnestly, very seriously. Earnestly means very seriously. Then booking slip, ticket. Booking slip means ticket. Registration number, the official set of numbers and letters shown on the front back of the vehicle, that is registration number. So these were the new words. Now let's move to the chapter number 8, explanation, the Great Bus Chase. Here is, the author is Mehta Sahib, Rishabh Sam Mehta, who is a travel writer and photographer from Mumbai. He enjoys traveling and especially likes to take driving holiday across India. Apart from writing about his journeys, he also enjoys with writing about history, trails, food, street markets, entertainment and lifestyle, personal encounters and adventure sports. Mehta published his second book, Fast Cars and Fidgety Feet, in 2016. So Mehta is the person who likes to travel. He is a writer and he has written his own experience here. So what happened once he met Mr. Junjunwala.
Junjunwala is the character. Jolly, the name suggested Jolly Junjunwala. So wonderful and funny story we are going to explain. Now let's see the story from here. Between Delhi and Panipat, on old Sesa Suri's Grand Trunk Road, the well-known road of that, is a place called Murthal, and this is called Murthal. The between Delhi and Panipat and old Sesa Suri's Grand Trunk Road. So Grand Trunk Road of Sesa Suri is called Murthal here. The writer Mehta sir says this one. I have often stopped here. He said, I have often stopped here while driving from Delhi to the Himalayas. When I used to go to Delhi, from Delhi to Himalayas, I used to stop here. 4:45 a.m. start from Delhi usually gets me here by 6 a.m. So this is the time I take. I depart. I start at 4:45 a.m. start from Delhi and usually gets me there by 6 a.m. ready for a cup of morning tea. So here Mehta sir is fond of traveling. He like to travel, and he discuss himself and how he likes to travel. A few years ago, I was driving, and he now says experience with us. अब वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं. A few years ago, I was driving to Amritsar, where I was planning to meet my parents, and I was about to go there and take them on a road trip to Kashmir and Ladakh, and it was my plan. There had not been much traffic after Murthal, and after Murthal there is no traffic. There had no been much traffic after Murthal, and I was enjoying the drive. And at that time I was going there, and I was enjoying the car driving. However, when I reach Garunda, I came across a small traffic jam. जब मैं गरुंदा पहुंचा तो मुझे एक ट्रैफिक जाम वहाँ पे मिला. तो ट्रैफिक जाम में मुझे लगा कि ट्रैफिक क्यों है. जब मैंने देखा, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस टू मूव, और मैं वहाँ पे जो बस थी उसकी मूव करने का वेट कर रहा था. ट्राइंग टू डिसाइड वेदर आई कुड पुल आउट फ्रॉम बिहाइंड द बस, वैन सडनली देयर वॉज अ फ्रेंटिक. मैं आगे निकलने वाला था, अभी फ्रेंटिक. आई एक्सप्लेन द मीनिंग. फ्रेंटिक मीन्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज ऑफ ग्रेट इमोशन सच एज वरी. चिंता की वजह से जो हम कंट्रोल के बाहर चले जाते वो फ्रेंटिक. जो एक लागणी है चिंता की, वो रैपिंग ऑन द कार्स फ्रंट लेफ्ट विंडो एंड स्टेल्टर आई टर्न टू सी अ मैन लुकिंग एट मी. तो जब वहाँ पे कार के बाजू में खड़ा था आदमी, मैंने उसकी तरफ देखा. आई रोल डाउन द विंडो एंड द मैन शोड हिज फेस इन एंड सेड. जब मैंने rolled down the window, and then the old man showed his face to me and said, hello, my name is Jolly Junjunwala. जब मैंने जो विंडो खोला तो उसने ये मुंह डाल के मुझे बोला, I am Mr. Junjunwala. प्लीज़ बस कौन, चेज. और कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि हमारी बस चली गई है तो हमें उसमें जाना है, प्लीज़ चेस करके पकड़ दो ताकि हम उसमें बैठ जाएं और हमें जहाँ जाना है वहाँ पे जा सकते हैं. आई आस्क्ड द मैन टू काम डाउन. मैंने बोला शांति रखो, कोई बात नहीं. टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ्स, श्वास ले लो, सांस खा लो, एंड देन कंटिन्यू टॉकिंग, बाद में बात करो. हिज टेल ऑफ वो वॉज दैट ही हैड बीन ऑन अ बस. और उसकी चिंता की बात ये थी कि वो बस में थे, बस टू चंडीगढ़ which had stopped to give its passenger a 50 minutes break. और 15 मिनट का जो ब्रेकफास्ट का ब्रेक था वहाँ पे उसने रोका था
बस को। तब ये सब उतरे थे, तब शायद बस निकल गई थी और ये जो भाई साहब है झुनझुनवाला सर, वो वहाँ पे शायद बस उसे छोड़ के चली गई होगी और शायद ऐसा ही है, यही है। जॉली हैड गॉन अहेड एंड ऑर्डर्ड द ब्रेकफास्ट। जॉली हैड गॉन अहेड एंड ऑर्डर्ड द ब्रेकफास्ट व्हेन ही वाज हाफ अवे थ्रू इट द ड्राइवर हैड स्टार्टेड द बस। जब वो नाश्ता का देने का मतलब नाश्ता के लिए ऑर्डर देने गया झुनझुनवाला, जब झुनझुनवाला की बात होती है कि वो कैसे बस चुक गए थे, जब वो जाते हैं तो जो ड्राइवर है वो बस वहाँ से चला देता है। गिव इट पैसेंजर द 50 minutes given, but when he was half away through it, the driver had started the bus and driven off 5 minutes before the scheduled time. शेड्यूल जो टाइम टेबल होता है उसके पहले 5 मिनट पहले जो ड्राइवर थे उसने बस चला दी। Another bus had immediately pulled into the parking spot left vacant by the departing bus. और जो बस चली गई थी उस जगह पर दूसरी बस से आके वहाँ पे वैकेंट जगह पे अपनी जगह ले ली। ब्लिसफुली, जॉली ब्लिसफुली अनअवेयर अबाउट व्हाट हैड जस्ट हैपन। लेकिन उसको पता नहीं था जॉली को कि मैं यहाँ पे रुक गया हूँ और मेरी बस यहाँ से चली गई है। जॉली सर को पता नहीं था। ही रियलाइज लेटर, left the restaurant and got into the bus. Blissfully unaware about what had just happened, left the restaurant and got into the bus. To his great surprise, he found a monkey-capped clad man sitting in his seat. देखो कभी कभी हमारे साथ भी होता है, बस जहाँ से चली जाती है और हम वापस जाके बस में बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके बैठते तब पता चलता है कि ये बस तो चली गई है, दूसरी बस है, ये बस तो नहीं है, दूसरी बस है। तब उसे पता चलता है कि क्या हुआ है, खुद की बस तो वहाँ से चली गई थी। भाई साहब आए नाश्ता लेके, जैसे कैंटीन से बाहर निकले, जहाँ पे बस खड़ी थी जो डिपार्ट हो गई, वहाँ पे दूसरी बस थी वैकेंट में आई, वहाँ पे वो बस में बैठ चढ़े तो वहाँ पे देखा एक मंकी कैप क्लेड मैन वहाँ पे बैठा था, एक जो आदमी था वहाँ पे कैट पे बैठा था। हिज बैग्स इन द और हैड लगेज सेल्व्स टू सीम टू हैव चेंज। और उसने जो कांधी होती बस में जो सेल्फ होती उसमें देखा कि हमारा लगेज है क्या नहीं, लेकिन वहाँ पे लगेज भी नहीं था। एंड have changed color and size. He quickly realized what had happened. अंदर जाके पहले तो बस में जाता है कि मेरी बस में, बाद में पता चलता है कि बस हमारी नहीं है, दूसरे की है, पहली बस तो चली गई है। और बाद में वो सब चेक करता है और बाद में वो आदमी को वहाँ पे देखते हैं, बाद में उसे पता चलता है कि शायद मेरी बस यहाँ से चली गई है। बस में आके चढ़ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वहाँ पे जो आदमी था वो नहीं, जो सेल्फ थी, जो सेल्फ कांधरी कहते हैं, जो जहाँ पे हम चीज़ रखते हैं, बैग्स रखते हैं, वो भी अलग थी, साइज़ भी अलग थी, बैग की साइज़ भी अलग थी, चेंज भी मतलब कलर भी चेंज था, सब अलग था। नाउ ही सेड अर्नेस्टली हमने बताया था अधीरता से, प्लीज़ आई नीड योर हेल्प टू कैच अप विद द बस। जल्दी करो प्लीज़, मुझे आपकी मदद से मुझे वो बस पकड़नी है। सो मेहता सर को जो झुनझुनवाला सर है वो कहते हैं, आई क्वाइट अंडरस्टूड द ट्रबल जॉली वॉज इन एंड आई हैड अ क्विक कार। और मुझे पता चला कि ये जब मुश्किल होती है तो कैसा होता है। आई वॉज श्योर आई कुड कैच अप विद द बस सून। और मैं तो श्योर था कि मैं वो बस को पकड़ लूँगा। नाउ ही सेड अर्नेस्टली, हरी अप प्लीज हेल्प मी, आई एम नीड ऑफ योर हेल्प। ओके गेट इट। मैंने बोला कोई बात नहीं, बैठ जाओ, लेट्स गो एंड कैच योर बस। चलो बैठो, मैं आपकी बस पकड़ देता हूँ। देखो कितना अच्छा आदमी है, जो जिसे पहचानते नहीं है उसको भी वो लेके जा रहे हैं और बोलते चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ और बस को पकड़नी, वो बस हम पकड़ लेंगे। ओके गेट इन, लेट्स गो एंड कैच योर बस। आई टोल्ड हिम चेयरफुली, 1 minute प्लीज, ही रिप्लाइड। लेकिन बैठते बैठे झुनझुनवाला सर बोले, जॉली सर बोले, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। ही रिप्लाइड एंड
trotted back into the restaurant. He emerged with two ladies on either side of him. वो रेस्टोरेंट में गया और वहाँ से फिर से अवतरित हुआ, बाहर आया, तो उसके साथ दो लेडीज भी थी. He emerged with two ladies on either side of him, दोनों बाजू. My wife and my sister-in-law. ये मेरी वाइफ है और ये मेरी सिस्टर इन लॉ. He explained with a smile. स्माइल करता है, भाई देखो मैं अकेला नहीं हूँ, ये साथ में सब. This is my wife and this is my sister-in-law. He smiled with a smile. I was taken aback. आश्चर्यचकित हो जाना. I was taken aback. All this time I had assumed that Jolie was traveling alone. मुझे लगा कि यार भाई वो तो अकेला जा रहा था, लेकिन इसके साथ तो पूरी फैमिली है भाई, क्या करें. I realized that he hadn't even told, and then I realized that he hadn't even told them what had happened. और ये दूसरी बात यह है कि महाशय ने जो अपनी पत्नी और जो अपनी सिस्टर इन लॉ है उसको बताया भी नहीं था कि हमारी बस छूट गई, क्योंकि वो तो नाश्ता कर रहे थे वहाँ पे रेस्टोरेंट में. So, and then I realized that he hadn't even told them what had happened. As he told them, the sister-in-law almost fainted. जैसे कहा कि हमारी बस छूट गई थी, जो सिस्टर इन लॉ है वो fainted, बेहोश हो गई. The wife began shouting at Jolie about being so careless. और पत्नी का तो यही काम ही होता है, पति पे चिल्लाने लगी, आपका काम कभी ठीक नहीं होता है, देखो बस छूट गई, अब क्या करेंगे. लेकिन उसको पता नहीं कि जोली सर है, उसने मेहता सर को पकड़ लिया है. I felt very sorry for Jolie. मुझे बहुत दुख हुआ जोली के लिए. I got out and helped the two women into the back seat of the car. मैं नीचे उतरा, जो फेंट हो गई थी उसको ठीक किया और उसके पत्नी को बोला, मैं कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बस जो बस है वो पकड़ दूंगा, कोई बात नहीं. I felt very sorry for Jolie. I got out and helped the two women into the back seat of the car. Then I asked Jolie to get into the front passenger seat. We set off. I felt very sorry. Then I got out and helped the two women into the back seat of the car. Then I asked Jolie to get into the front passenger seat. We set off. Jolie was hanging out of the window, trying to get a look at the drivers of the buses we were rapidly overtaking. And then we were overtaking the other vehicles on the way. But at that time also Jolie was looking for the bus, whether it is seen or not. When I asked him if he remembered the registration number, he shook his head sadly. मैंने बोला, भाई आपको पता है कि जो आपने जो रिजर्वेशन या करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो आपको पता है? तो वो दुख के साथ कहता है, ना मुझे पता नहीं है. So really careless, we can say. But when I asked him if he remembered the registration number, he said no, sadly. But the sister-in-law reached into her bag and pulled out a booking slip. We can say ticket. लेकिन sister-in-law थी, उसने अपने बैग में से जो बुकिंग स्लिप मतलब जो टिकट थी वो निकाली. ऑन इट वॉज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द बस. अगर हम उसे पकड़ रहे हैं, लेकिन बस का भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर तो याद होना चाहिए, वरना कोई भी सब बस एक जैसी होती है तो कैसे पकड़ेंगे, वो डिफिकल्टी थी. देन वी हैड ऑलरेडी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. We had already wasted a lot of time at Garunda and were now in such rush traffic while driving past Karnal. And then we were because we spent a lot of time at Garunda and now we are in traffic. Fortunately, after this, the road opened up a bit and traffic cleared. But then the traffic was cleared. I started driving faster and we were soon
and we were soon doing 120 kilometers per hour and overtaking the other cars on the road. Then we were at the speed of 120 and we were overcrossing the other vehicles, including the cars. At times, I had to apply the brakes hard and swing in and swing out quickly to maintain our speed. And that time also I had to apply it the car, and I had to swing out quickly, maintain our speed. There was no noise from the rear seat, and there was no noise, not a sound, not a noise from rear seat. I looked in the rear, then I looked in the view mirror, and saw Jolly's wife and sister-in-law holding on to each others. मैं इतनी स्पीड से चला रहा था, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, वो एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं, इतने डरे हुए हैं. आई वॉज ड्राइविंग सो क्विकली बिकॉज वी हैड टू. If you want to catch the bus, then we will have to ride with so speed. There was no noise from the rear seat because they were holding each other and sitting with great fear. I looked in the rear view mirror and saw Jolly's wife and sister-in-law holding on to each other, face white with fear. और एक दूसरे के जो चेहरे थे वो डर के मारे पीले हो गए थे, फिक्के हो गए थे. Jolly, on the other hand, seemed to be enjoying my driving. But Jolly was enjoying my driving. He was not worried about that. He was enjoying. Suddenly, Jolly gave a whoop of joy and pointed ahead. And then Jolly gave a whoop of, we get short, loud sort of joy. हाँ चलो मिल गया. That is whoop, मतलब खुशी का आवाज. Whoop of joy and pointed ahead. देखो 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 आगे. Their bus was 75 meters ahead. उसकी जो हमारी जो बस थी वो 75 मीटर आगे थी. I flashed my lights and tooted my horn as I drew out alongside the bus. मैं हॉर्न बजाता था, उसको बता रहा था कि रोको रोको बस, but trying to tell the driver that he should pull over and stop by the side of the road. और मैं ये बताना चाहता कि आप साइड में बस रोको, लेकिन ड्राइवर भी ऐसा था, वो समझने वाला नहीं था. बट ही जस्ट इंक्रीज स्पीड. आई बिगन चेसिंग आफ्टर द बस. जैसे मैं स्पीड से चला रहा था तो बस वाला भी उतनी स्पीड से चला रहा था, तो वहाँ पे रोकने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि वो जॉली मूड में था. जो जॉली की बस का जो ड्राइवर था वो भी जॉली मूड वाला था. वी वर गेटिंग क्लोज टू सहारनपुर एंड ट्रैफिक वॉज क्वाइट हैवी. जब सहारनपुर पहुँचे तो ट्रैफिक बहुत थी. I drew up alongside the bus again until Jolly's window was alongside the bus driver. Stop the bus at once, he shouted. जैसे हम ड्राइवर के पास पहुंचे साइड में से, वैसे ही जोली ने बोला बस रोको. Stop bus at once, he said. But his face was bright red. The bus driver laughed at him and said, लेकिन बस ड्राइवर था उसके सामने हंसा और बोला बस विल ओनली स्टॉप इन अम्बाला, कैच मी इफ यू कैन. भाई ये अम्बाला रुकेगी, अगर तू पकड़ सकता है तो मुझे पकड़ ले. और ये तो जोली को उसने रेट कर दिया, आग बबूला कर दिया. कैच मी इफ यू कैन. आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट आई कुड हैव टू फोर्स हिम ऑफ द रोड व्हेन वी केम टू अ रेड लाइट. ट्रैफिक हैड स्टॉप्ड एंड so the bus driver also had to halt. And then we reached there and he also had to halt. Jolly was out of the car in a flash. जैसे बस रुकी जल्दी से कार में से उतरा. He yanked open the bus driver's door and pulled the man out of the cabin like a sack of potatoes. जिससे बटेटा का जो कोथड़ा होता है उसकी तरह ड्राइवर को ऊपर से नीचे गिराया. Then he gave him 2 tight slaps and started shouting. बाद में उसको मारा और चिल्लाने लगा. हम रुक गए, अच्छा हुआ कि भाई था हमें छोड़ने आया, नहीं आता तो हमारा क्या होता. The 2 women were still in the car, terrified, amusing. They had need time to recover. मुझे लगा कि शायद उसको रिकवर करने में टाइम होगा क्योंकि वो बहुत ही डर गए थे. I rushed
to help the bus driver. मैं बस ड्राइवर को बचाने गया. The other passenger of the bus had also rushed out and were now trying to pull Jolly off the frightened driver. जो ड्राइवर को जो दूसरे थे वो भी ड्राइवर के पास गए और बोलने लगे, भाई अगर ये ड्राइवर को तू मारेगा तो बाद में हमें पहुंचाएगा कौन. और ये एक जो फनी डायलॉग है. बस एंड हैड ऑल्सो रस्ट out and were now trying to pull Jolly of the frightened driver. अरे पुत्र, if you beat him up, who will drive the bus to Chandigarh? One passenger said, trying to make Jolly see reason. That worked and Jolly let go for the. अरे पुत्र, अगर तू इसको मारेगा तो हमें कौन पहुंचाएगा. बाद में उसको समझ में आएगा सही बात है. The driver stood straight immediately, but he was still shaking like a leaf. खड़ा हुआ लेकिन अभी भी वो हिल रहा था जैसे पत्ते की तरह. One of the passenger, a kind old lady, pulled out a shiny thermos and poured the driver some tea. जो एक लेडी थी उसने चाय दी, जो थर्मस होता है उसमें से चाय निकाल के वो आदमी को ड्राइवर को पिलाया. You can see here the picture. How Jolly is got angry and the driver, you can see at the time of chasing he was making joke with Jolly that if you can catch if you can. Now he was halfway through the tea when Jolly's wife and sister now fully recovered. जब वो चाय पी रहा था तब जोली की पत्नी और जोली की सिस्टर इन लो जो कार में थी वो भी रिकवर हुई. और आई ऑन द सीन पे आई. अब क्या हुआ, झगड़ा बगड़ा खत्म हो गया. ये यहाँ पे पहले बस चली गई, वहां पे भी उसको पता नहीं था. All three of them then got onto the bus, checked that their luggage was safe and got back down them and thanked me. अंदर चल गए और मुझे कहा थैंक यू, धन्यवाद. Finally with all the passenger on board this time the bus started off towards the Chandigarh. और बाद में बस चंडीगढ़ की ओर चली. I have driven on that road plenty of times after that. Every time I drive past the signal where I finally got the bus stop. और मैं हर बार निकलता हूँ तब याद करता हूँ देखो मैंने यहाँ पे बस पकड़ी थी. I can't help thinking of Jolly Junjunwala and the great bus chase. So this was from, it is taken from an it is taken from the book of Risad Sam Mehta. He has written, and it is a funny story. It happens with us also that at times we also we also have the need of the others in order to catch the bus. It happened with me in Morbi only. I don't want to tell about that. So this was the funny story. Nothing is too hard, nothing is difficult, very easy story, and you can read yourself, you can understand. So very easy story. This is all from the story, the chapter number 8. I hope and trust you have got. Thank you very much.